Hello everyone, I welcome you all to my channel Craft Blooming Hub। तो आज मैं बना रही हूँ एक ट्रिंकेट बोल विथ रेजिन, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा टाइटल और थंबनेल देख के। So this was my first trial making this. I just tried to make one, so please ignore the mistakes. You can use this as a jewelry bowl as I'm showing here, or you can keep your knick-knack things, या फिर आप इसे डाइनिंग या टी टेबल पे भी एज अ डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं। Now let's start the process. So I'm using this silicone mold which I purchased from Amazon. सारे products के links आपको description box में मिल जाएंगे. In case you are willing to buy, you can check it out. So here with the help of a tape, I'm cleaning the mold. Sellotapes remove every minute thing from silicone molds like dust particles, hairs, cured resin residues and other such things. And it has to be the most easiest and convenient way of cleaning silicone molds. तो मैंने इस बार एक अलग ब्रांड का रेजिन परचेज किया है। जिन लोगों ने मेरे पुराने रेजिन ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो क्या देखे यार, देख लो ना यार। Click on the I button please. I love the packaging of this product, easy to handle, easy to use, and also I'm happy with the quantity with this price range. Always remember, wear hand gloves while working with resin. Precaution is very important. Let's mix this now. It has to be mixed in 2:1 ratio. That means if we take 2 parts of resin, we have to take 1 part of hardener. And I'm gonna take 3 spoons of resin and 1.5 spoons of hardener. I think I need to buy measuring cups and weighing machine for proper measurements. अब इस मिक्सचर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स, जब तक रेजिन मिक्स होके पूरा क्लियर और ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। So these are my cute silicone cups for mixing resin. My amma was saying that this has to be some cute decor piece and we should keep it in showcase. I'm taking out some resin in a small cup और उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक पिगमेंट यूज़ करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी क्राफ्ट सप्लाईज यूज़ कर रही हूँ उसके सारे प्रोडक्ट परचेस लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि मैं एजेस को पिंक शेड में रखूँ और बीच में एक सिल्वर मेटेलिक काइंड ऑफ थोड़ा सा टेक्सचर दूँ। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड नथिंग एल्स। इस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कैसा बनेगा। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सो हियर यू कैन सी कि मैं थोड़ा सा सिल्वर डस्ट पाउडर यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ रेजिन के साथ। दिस इज़ नॉट एक्चुअली पेंट, दिस इज़ पाउडर, दिस इज़ डस्ट पाउडर, जिसके लिए वो मेटेलिक इफेक्ट आता है। सी हाउ ब्यूटिफुल एंड शाइनी द टेक्सचर इज। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द डस्ट पाउडर। और लास्ट में मैं थोड़ा गोल्ड लीफ फॉयल रेजिन के साथ मिक्स कर लूँगी एंड आई विल स्प्रेड इट ओवर द सेंटर ऑफ द बोल। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, और फर्स्ट लेयर थोड़ा सा हार्ड होने के बाद अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स के बाद मैं एक फाइनल लेयर दे रही हूँ सिल्वर डस्ट पाउडर यूज़ करके। सो हियर इज़ अ क्विक रिक्वेस्ट गाइस, अगर वीडियो आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लग रहा है, आपको प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना यार, थैंक यू। एंड हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन स्टेप। दिस इज़ आफ्टर 12 to 15 आवर्स, और आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि रेजिन को कम्प्लीटली क्योर होने नहीं देना है। अगर रेजिन कम्प्लीटली क्योर और ड्राई हो गया तो ये बोल नहीं बनेगा। दिस इज़ द स्टेज वेयर रेजिन इज़ बेंडेबल एंड नॉट ड्रिपिंग, तो इसी स्टेज पे हमें बोल बनाना होगा। एंड द मेन टास्क इज़ टू फाइंड अ प्रॉपर शेप ऑफ बोल टू इंसर्ट द रेजिन पीस so that it fits perfectly into the bowl and takes the shape of the bowl. I have applied baby oil inside the bowl so that when the resin bowl gets cured, it comes out easily. It's completely hard now and our trinket bowl is almost ready. कटर की हेल्प से मैं एजेस को थोड़ा ट्रिम एंड स्मूथ कर दूंगी so that there is no sharp edges. I wanna let you know guys that I'm running a small business for 2 years where I sell my handmade products, which mostly includes clay and resin earrings, pendants,
keychains, decor pieces, and many more. And I'm soon gonna launch this trinket bowl, coasters, and plates also. So if you want to purchase anything, you can DM me on my Instagram, and please do follow and check my other products also. And this is the final and additional step where I'm using golden acrylic marker pen to enhance the beauty of this bowl. And our trinket bowl is ready. Let me tell you guys, this product sold out real quick, and it was bought by my sister. After I finished making this, I immediately showed it to my sister, and she was so amazed, and she was like, "How did you make it? This is so cute. I want it, I want it." And it was so sweet of her that she didn't want it for free. She legit asked the proper price for it, and she said, "This is your work, this is how you earn, and I can't take it for free." And that was so overwhelming. I love you, Baita. Do let me know what you think about this product in the comment section. So that was it for today. I'll see you guys in the next video. Till then, take care and stay safe.